देखो एक्चुअली इसमें क्या है ना, मोस्ट ऑफ ऑल जो है तुम्हारा, जो मोस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस जो है, ठीक है, उनका सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, मतलब जो बैकअप का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, बट कुछ ओपन सोर्स जो डेटाबेसेस है, ओपन सोर्स डेटाबेसेस का क्या है कि नेट बैकअप का इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है उसका, किस तरीके से बैकअप लेते हैं। जैसे अगर अभी जैसे मैं बात करूं, मांगोडीबी जैसे। हाँ सॉरी, मांगोडीबी ओपन सोर्स है ना। हाँ हाँ, मोंगो डीबी हो गया, या एक पोस्ट ग्रे हो गया, ठीक है। ठीक है, वो भी सर इंस्टॉल, मैं उसका लैब क्रिएट करता हूँ अभी वीकेंड में। उसका भी हम करेंगे वो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। देखो लैब अगर तुम रेडी कर लोगे तो फिर तो जो भी बताओगे वो सब कर लेंगे। हाँ मैं करता हूँ एक्चुअली। अभी है ना, ये दो दो मैंने माइस्क्यूएल एमएस एसक्यूएल बना दिया है ना, उस पे अभी कर लेंगे। ये डिलीट कर दूंगा वर्चुअल मशीन्स, उसके बाद मांगो और पीएल कर दो। तो कैसा होगा, तो इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आज हम इसकी बात कर लेते हैं, एमएस सीक्वल की और ओरेकल की। ओरेकल, ओरेकल नहीं इंस्टॉल किया सर, सिक्वल नहीं और। वो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं, सेम सेम तरीका है दोनों का, ओके। ठीक है। तो इन दोनों का बैकअप लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज द स्क्रिप्ट बेस्ड, सेकंड इज द इंटेलिजेंट पॉलिसी। ओरेकल के लिए है ओआईपी और सीक्वल के लिए एसआईपी, सीक्वल इंटेलिजेंट पॉलिसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट बेस में क्या, स्क्रिप्ट बेस की हम बात करते हैं। स्क्रिप्ट बेस में क्या होता है, दिस इज फॉर ये जो है ना ओआईपी और स्क्रिप्ट बेस्ड, ठीक है। दिस इज इंटेलिजेंट पॉलिसी एंड दिस इज द स्क्रिप्ट बेस्ड, और वी कैन से अ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। in this method actually we are using the database, the backup and restore commands, ठीक है। we are preparing that script and we are using the database backup and the script command to take the backups, correct। नेट बैकअप में स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट रन करना पड़ता है हमें। हाँ एक्चुअली देखो क्या होता है, we will create a script, right। I'll show you that script contain, right। हम्म। I'll show you that script contain, and we need to create that script, then we have to run that script by NetBackup policy, ओके। right। NetBackup is running that script, then like that script will start, and that will take the backup of that the database, the ओके। SQL database or Oracle database, right। तो पहले हम first let's understand how, like I am not going the internal or the deep architecture of the database, right, just overview. This is your database, right, we have the data files here, right, these are the data files, right. On top of that you have a schema and tables. In tables we are like we are saving our records. Let's suppose you have one database for the bank, right. So the bank, this is your table, and what kind of the informations are there in this. Let's suppose serial number, then the नेम, person name, टाइटल। right, then account number, then account balance, correct. The other information like pan card and Aadhaar card, all these details are stored in this tabular format, correct. So these actually these records are storing in these data files. These are the data files, so where these like records are storing here,
right? And every time, now there are two things here. Okay, the bank person is doing any new entry, any entry here, so it will generate a one log file also, that we call the transaction logs. Who will create? It's a database person, database administrator. No, actually not database. Actually that is like who is using this application, Okay. right? Let's suppose this is your the bank database, Mm-hmm. right? And bank person has the front end, correct? Front Correct. end, they have the front end. Mm-hmm. Now they are, if so, if any new person came, he is asking for open the account, Mm-hmm. right? Then bank person open that form and filling all these information. Mm-hmm. Okay, that information is storing in these data files, Correct. correct? But before that there is a one log is also generated, Mm-hmm. so that we call the logs or transaction logs Okay. Okay. or archive logs, correct? So now I am just coming back to the backup things, right? In the backup we have to take the backup of these data files and these transaction logs, Okay. right? Just to remember these things, if we are talking about the database backup, then we have to configure the two things. The first, the data files backup. Second, the archive or transaction backups, Yeah. right? So I just like try to like explain these things, what is the data file and what is the transactions files, right? Mm-hmm. But you just need to like remember these things. If we are talking about any database backup, we have to configure these two things in the backup: the data file backup, that we called the full backup, full Correct. database backup, Mm. correct? And these are the archive backups that you can it's not the incremental, this is not the incremental, but this is the archive backup. ओके. ओके So सर. यहाँ पे जो आर्काइवर है ना, उसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है सर? एक्चुअली आर्काइव होती क्या है ना, देखो आर्काइव क्या होती है, आर्काइव जो है ये इनका बैकअप होता है, ये मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है आपकी डेटाबेस पे, if any transaction is happening on your database, then it is generating one log file that we called archive, and in some time, after some time, it will be committing to your database, ओके. right? Let's suppose on Monday you have taken your this the full database backup, हम्म. correct? करेक्ट. करेक्ट. On Tuesday you schedule your archive backups, हम्म. archive backups. Wednesday also it's archive backup. ओके. Till Sunday हम्म. it's archive, ओके. correct? Now let's suppose on Sunday your database crashed, हम्म. then you have to first restore, this is your full backup, you have to restore this full backup. After that, this archive till Sunday, you have to restore all these things, Okay. And then, sir, what because is the these best practice archive, to configure archive backup? no, it's not like the best practice. Actually the thing is, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, अभी आप लोग सोच रहे हो, बहुत बहुत लो लेवल पे सोच रहे हो, ठीक है? लेट मी टेल यू, ठीक है? अभी अब एंटरप्राइज लेवल पे हम बात करते हैं, हम्म. ठीक है? एंटरप्राइज लेवल पे बात करें, लेट सपोज एनी अकाउंट, जस्ट टेक द एयरटेल, हम्म. ठीक है? तो एयरटेल के अंदर जो डेटाबेस का साइज है, अब लाइक हाउ यू थिंक, लाइक हाउ मच द साइज ऑफ दिस डेटाबेस? Megabyte. It's Airtel India, I am talking about that Airtel India, right? It's more than 200 TB, right? Did you think this 200 TB
the full backup is possible on a daily basis? No, it's not possible. It's not possible na, right? So we have to plan like we are taking the weekly or weekly full backup, then daily the archive backup, because archive is also, if in case we need to restore the database once again, then we have to restore this full backup. After that, the how many archives you have, archive backup you have to restore all those archive backups till date, right? So let's suppose on the Monday you have taken full backup, Tuesday archive, Wednesday archive, and Thursday again you have taken a full backup. Then you do not need to restore these archives. You can use this one full backup, right? So for restoring the database, we need the latest full. After that, the archive, how much the archive we have to restore those. You got my point? Yes, sir. Right, the full backup, because in the restore, देखो actually restores in it is easy to understand, like how like we have to configure the backup for that. That's why I'm just telling the restore process. ठीक है, restore में हमें क्या क्या चाहिए वही चीजें हम बैकअप में कॉन्फ़िगर करेंगे ना, right? What we think, what we require in a restore, right? If we understand those things, then it is easy to configure the backup for that na, Correct. right? So so it is clear, like the what thing we need to configure the backup, Yes. right? We have to configure the full backup, we have to configure the archive backup. Okay, now now coming to that, we discuss the two way. The first is the script based, right? So in script based, most of the time in Oracle or SQL, right, the DBA team is creating the script, right? They are creating the script and they are providing that path to us. They are providing the path to us, then we are putting that path in our policy. I'll show you how we have to put that, right? But in SQL we can also create the script at our side, but in Oracle we need a DBA help. Okay. In SQL we can create the script at our side also, right? Now the another method, the intelligent, right? In intelligent, the process is the net backup is directly connected to your database, to your the database. It is connected to your MS SQL or Oracle. It is connected to your the SQL database or Oracle database by the user ID. अरे Right? आपके पास आपके इन्वायरमेंट है इंटेलिजेंस का? I have the SQL and Oracle. I have the SQL and Oracle PL, Postgre and MongoDB also. Can you show Right? after that? Yeah, I'll show you. Right? So this SQL, so in this method, we require the database user ID and password, right? Then NetBackup directly connect to your database and integrate with your database and directly take the backup, right? This is your intelligent policy. So in intelligent policy, you do not do anything. You just need to put the credentials in the in the NetBackup database. Then NetBackup directly connect to your the SQL or Oracle database and start taking the backup. This is intelligent method.
Actually, currently this process we are using, this is the older method. I don't think anybody is using this one. Okay, but will she like both the processes? Okay. Now script based in this. In script based method, for Oracle, right, we have to create a link, create link between Oracle and NetBackup by the Oracle underscore link command. Right, there is a command to create a link between the Oracle and NetBackup. You have to run this command on the database server, right? Then it will create the net linking, and it will the NetBackup binary and Oracle binaries. It will actually, what it is what it is doing, it is like creating the link between the NetBackup binary and the Oracle binaries. Right, actually the thing is, the Oracle, right, Oracle is a very smart the database, right? It cannot allow to anybody to do any things in their database, right? So there is a utility that we call the RMAN, recovery manager. Okay. Recovery manager, right? So basically this recovery manager is basically for like responsible for backup and restoration. Okay. Correct. This backup and restoration, this recovery manager is basically connect to your net backup, and actually this recovery manager is intermediate. So like it's a mediator. Let's suppose this is your the Oracle database, and this is your net backup. This is the RMAN, right? It's take the backup from database and it send the backup to the net backup. This we call the recovery manager, RMAN. Correct. So in Oracle, you just remember in the older method or the script based method, you need to create a linking, right? This linking, okay, actually I just like explain in the background also, like where it is linking. So it is connecting to your RMAN. The net backup is connecting to RMAN, and RMAN has, this is the RMAN is the recovery manager for the Oracle database. Then this take backup from here and send the backup to here, right? Now is that fine? Krishna, Hemant, Yes, sir. MS SQL, right? In this first we need a user with DB with database permission. One second. हेलो, हाँ ठीक है. Right, we need one user with the DB permission, first thing. Second thing, run BPCD,
run bpcd service with this user. Available, right, with this user. Then configure the backup. So the first thing, we need a user. Second thing, we need to run the bpcd service on the client machine with this user. Then configure the backup, the script based backup. Okay, हमें दोनों साइड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये कमांड स्क्रिप्ट। नहीं, दोनों साइड क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? सिर्फ उस क्लाइंट पे करना पड़ेगा ना, जिस क्लाइंट का बैकअप लेना है ऑन द डेटाबेस सर्वर। मास्टर सर्वर पे ही करना पड़ेगा ना? मास्टर सर्वर पे क्या? मास्टर सर्वर पे सिर्फ ये होगा, ये डेटाबेस पे होंगे ये दोनों। देखो यूजर कहाँ क्रिएट करोगे? यूजर तो उसी सर्वर पे क्रिएट करोगे ना जहाँ पे डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, वो सर्विस भी जो है, दैट सर्विस इज रनिंग ऑन द क्लाइंट मशीन, यू हैव टू रन दैट सर्विस विद दिस यूजर, so this is also happening on the client machine or on the database server, right? Then you have to configure this policy. Okay. So this is on your master server. Right, any doubt in this? Any doubt or any question? It will support only for Windows, sir. Yes, MS SQL is MS actually SQL MS server SQL it will is support only only. support on the Windows only, right? MS SQL, Not Unix and no, not actually. MS SQL is not installing on the, actually it's only Windows based product. This is a Microsoft product, right? but Oracle supported to both, sir. Yeah, Unix Oracle is and both. Windows. Oracle is actually, in Oracle we just need to create a linking, right? There is a node, the user concept. We need to just create this link, right? Either it is the Unix or either it is the Windows. Right, guys? Yes, no? Yes, sir. अभी दिखाओ तुम्हारा वो इंस्टॉल हो गया? या वो दूसरा वाला मेथड भी अब वो वाला भी कर ले, OIP वाला? For both file system, SQL, Oracle, and VMware, 4 is same, sir. Or else, Sorry, what is same? file system, SQL, Oracle, and VMware. Configuration are all are same or else not, sir? Same, I'm not getting you thing. Like what same? No, brother. All those technologies are different. For file system, we have to All install of agent on that configuration. system. Okay. VMware is the Okay. virtualization platform. Mhm. Even I guess you not review the classes, right? At the starting, we already talk about these things, right? The file system, the database, the virtualization. It could be your Unix or Windows. The database, it could be your the Oracle, MS SQL, right? Postgre, DB2, MongoDB, virtualization, your VMware and Hyper-V. सर यहाँ पे न्यूटनिक सपोर्टेड नहीं है नेट बैकअप के लिए? न्यूटनिक्स भी है, न्यूटनिक्स भी है, बट और न्यूटनिक्स यार कहीं पे यूज नहीं हो रहा ना अभी, मतलब मैंने कहीं देखा नहीं और मैंने किया भी नहीं नहीं। सर, अभी
हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो न्यूटन से चलता है मोर देन वीएम में। अच्छा न्यूटनिक्स है। हाँ हाँ। तो और तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है? नेट बैकअप चल रहा है, क्या चल रहा है, या कॉम वोल्ट है? यहाँ पे कॉमोल्ट है, नेट बैकअप है, आक्सो है, ध्रुवा है, अब अच्छा ध्रुवा बारह भी है। कोड़ा है। हाँ, बारह कोड़ा है। टोटल सब 12 कुछ है। प्रोडक्ट है सर। 12 प्रोडक्ट है भाई। कौन सा अकाउंट है? सॉरी, अकाउंट अकाउंट कौन सा है मतलब? अकाउंट एक्चुअली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो अभी जो जिस क्लाइंट पे मैं बढ़ता हूँ HDFC है। अच्छा HDFC का है, तो HDFC ये अकेला HDFC ये में तो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर नहीं रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरी जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है ना, वो लोग 12 प्रोडक्ट पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ओके अगर ओके। HDFC में तो एक वेरिटास है एक और ये वेरिटास है HDFC में, और ओके। कॉमोल्ट है। अच्छा HDFC में वेरिटास और कॉमवोल्ट है, ओके ओके। ठीक है, तो ये यार कहाँ थे हम? OIP पे थे हाँ? ठीक है, OIP में क्या हो रहा है फॉर दिस Oracle and SQL, right? Once you install the NetBackup agent, NetBackup software, client software, NetBackup client software, right? Then NetBackup is auto discover your database name, your database and instance detail, right? Then it will show all these detail on the NetBackup console. NetBackup console under the application tab. Below the policy there is a tab, application tab. In that there is a the the MS SQL tab and Oracle tab. So here it will auto discover the how many the database server you have in your environment. If the NetBackup client is installed on that and it is connected to your master server, then it is auto discover the NetBackup, the database name and instance name. Then it will show you under this tab, right? Then you need to register this database with NetBackup. For that you need, I tell you, right, you need user ID and password, right? Once you go for the register, it will ask you that the database permission, user ID and password. Once you put that, then this database is registered with the NetBackup. Then you can create the policy and select that database and start taking the backup, right? I'll show you both the cases. Oh, अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ, अभी या हो चुका है? देखो इसमें लेफ्ट में जाओ, देखो ये जावा कंसोल है ना, एप्लीकेशन होस्ट प्रॉपर्टीज के नीचे, होस्ट प्रॉपर्टीज के नीचे देखो एप्लीकेशन वाला टैब। जस्ट गो अप this one, right? Now it is showing only the Microsoft SQL, right? Earlier the Oracle option was also there, but after 10 they just remove it from here. You double click here, all instances, right? Closed it. Close it, right? I believe you install this SQL on this server. It is auto discover, right? Just right. Have you created that user on that? You have user, the database permission, Actually, I haven't created user. I log in using the or Windows. have you? Okay, so that
जस्ट ओपन दैट। नो वहीं पे जाओ, वहीं पे जाओ उसी में। हाँ ठीक है, ये कर दो, ये ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे। So Krishna, how much do you have experience in the आपके Commvault? 3.5. 3.5, huh? So if I'm asking like how much giving the rating to you yourself in the Commvault, like support under of like 5 is the L3. Scale of 5. I'm saying the 5 is the L3. So how much giving you the rating to yourself? 3.5 और 4. 3.5 or 4. हाँ, जब मैं लास्ट प्रोजेक्ट में था ना, तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था। मैं अराउंड मैंने 10 to 12 इम्प्लीमेंटेशन। ओके ओके ओके। और अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो पूरा आर्काइवल का भी हैंडल कर रहा हूँ। वीएमआर भी है यहाँ पे, और क्लाउड भी है, और O365 भी है, पूरा उसका भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, O365 भी है। जो वीएमआर का भी है। ज्यादातर पहले जब ऑरेंज में था ना, मैं वहाँ पे ज्यादातर कॉमोड क्लाइंट थे। अराउंड 50 to 60 क्लाइंट मैं हैंडल करता था वहाँ पे। ओके। सो क्लाउड कौन सा है? AWS। AWS है। सो AWS का भी ऑन प्रेमिसिस के थ्रू हो रहा है या ऑन प्रेमिसिस वाला सेपरेट ऑन क्लाउड पे ही बनाया हुआ है उसका भी? नहीं, क्लाउड पे ही है उनका। अच्छा, क्लाउड का क्लाउड पे ही है, ऑन हाँ, प्रेमिसिस से नहीं जा रहा है? नहीं उसका नहीं जा मतलब रहा है। क्लाउड सेपरेट है और ऑन प्रेमिसिस सेपरेट है, हाँ, मतलब वो। सेपरेट है। वो एक्चुअली कहा है क्या है ना, वहाँ पे जो ज्यादातर वर्कलोड है ना, उनका वेरिटास पे ही जाता है। ज्यादा वर्कलोड वेरिटास पे लेते हैं। और जो आर्कावेल का है ना, जो सोर्स वन जो आपको मैंने बताया, उसका जो आर्कावेल जो डेटा है ना, वो कॉमोड पे ले रहे हैं। और उन्होंने अभी एक तीसरा कॉमोड के लिए वो रिक्वायरमेंट है उनकी, कि उनको जो क्लाउड का डेटा है ना, ऑन प्रीमाइस पे लेना है उनको। क्लाउड का डेटा ऑन प्रेमिसिस पे लेके आ रहे हैं, अच्छा। हाँ, जो कनेक्ट मैंने करो इसको, विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करो। दैट यूजर आई बिलीव। नहीं, यूजर रहेगा इसमें। सिर्फ उसे हमें ऐसे अथॉरिटी देना पड़ेगा जो हमें क्रिएट किया है ना। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, दो चीजें। एक तो जो यूजर आपने जिससे कनेक्ट किया, ठीक है, डेट यूजर हैज दी परमिशन नाउ। फर्स्ट वो खोलो लोकल यूजर एंड, ठीक है। ऐसे की जरूरत नहीं है, ऐसे को भी देखो, इसमें एक ना, एक ये है एंटी अथॉरिटी। हाँ नहीं सर, मे भी एसी की जरूरत लगेगी बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे मैंने कॉमोड में मैंने अब तक देखा है ना, विदाउट एक तो एनटी लगेगा या तो एसी लगेगा। एनटी तो ऑलरेडी दे चुका है उसको हमने। हाँ तो एंटी से भी हो जाएगा, एससी से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, ठीक है, किसी से तो भी कर ठीक है, सकते फिर हो। एनटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हम्म। इसका कॉन्फ़िगरेशन कम है, इसके लिए वो ज़्यादा लोड ले रहा है। कोई नहीं, देखो वैसे भी वो यूजर तुम्हारा जो एडमिन वाला यूजर है वो भी अब सिर्फ तुम्हें रजिस्टर्ड करना है। वहां पे जाओ कंसोल पे, जस्ट गो बैक टू योर कंसोल। ठीक है, राइट क्लिक, नो राइट क्लिक एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, यूज यहाँ पे डालो। एडमिनिस्ट्रेटर डाल दूँ? हाँ हाँ एडमिनिस्ट्रेटर डाल दो, पासवर्ड। ओके। डोमेन डोमेन यहाँ पे उसका नेम डाल एक दो, होस्ट नेम, सर्वर का होस्ट नेम। हो जाएगा सर यहाँ से डायरेक्टली। क्रेडेंशियल द डिफाइंड लोकली ऑन द क्लाइंट।
वो एक्चुअली जब होगा वो सर्विस पे ना करना पड़ेगा, उसे एंटी नहीं है मे बी। सर्विस पे ना, तो जो उसकी नेट बैकअप की जो सर्विस है, या तो उसको एंड अथॉरिटी पे चेंज करो। इसको सेकंड वाला ऑप्शन करो, यूज द स्पेसिफिक क्रेडेंशियल, ओके यहाँ डालो, और डोमेन में ना वो डाल देना, उसका सर्वर का नेम डाल देना। ओके ठीक है। दिस वन। ये देखो, अब रजिस्टर में देखो डेट आ गई यहाँ पे, रजिस्टर्ड में सेकंड लास्ट टैब, सेकंड लास्ट ओके टैब लास्ट, ओके ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो गया, राइट। अभी जाओ पॉलिसीज में। हेमंत कैसे हुआ, ठीक है, देखो वहां पे हमें वो यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए था, और जैसे ही क्लाइंट इंस्टॉल हुआ ऑटो डिस्कवर कर लिया इसने, राइट। इट्स ऑटो डिस्कवर योर द SQL database, right? Just create a new policy with the SQL type. Right, so first change, go up, no, up, MS SQL, right. No need to, just select this policy storage, right. Now just go in the schedule, click on new, select, put the name full, this is full, click OK, yes, click OK. We are not putting the window, right, we'll initiate the manual. Okay, just click new, once we'll create the archive also, put the archive or transaction logs, archive backup, yeah, arc, and change the type of the backup, the transaction log, click on OK. Right, now instance and database, right, so protect instance, right, protect instance, click on new, ओके the first one, right. If you are selecting the last one, this is the for older one, just click on cancel this, just click cancel, right. uh, wait, so many things are running now on your bichare laptop. इसको देखो ड्रैग करो, जस्ट ड्रैग करो इधर साइड में ना, अच्छा हो गया, ठीक है। देखो ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, बैच फाइल, क्लाइंट फॉर यूज विद द बैच फाइल, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, वो स्क्रिप्ट का पार्ट डालना है। जब ये करोगे, क्लिक ऑन ओके करो, यस, राइट। देखो ऊपर के ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, है ना, ये स्क्रिप्ट के ऊपर लिए यूज होता है क्या? ये स्क्रिप्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ अच्छा पे तो क्या करना है, फिर स्क्रिप्ट क्लाइंट नेम डालना है इन द बैकअप सिलेक्शन, जस्ट गो इन द बैकअप सिलेक्शन, न्यू करना है ना यहाँ पे? हम न्यू में वो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपके क्लाइंट नेम, ठीक है, क्लाइंट नेम, यू हैव टू पुट द क्लाइंट नेम,
right? Just click cancel, click on cancel here. एक बार बोलो बस। स्क्रिप्ट वाला भी देख लेंगे ना सर, कैसे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाला वर्क भी करता देख है? लेंगे, स्क्रिप्ट वाला भी देख लेंगे, डोंट वरी, स्क्रिप्ट वाला भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ ना? बैकअप सिलेक्शन में जाओ, बैकअप सिलेक्शन में हियर यू हैव टू पुट दैट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट पाथ। अच्छा ठीक है, वो स्क्रिप्ट कहाँ पे रखी हुई है ब्राउज करोगे, वो वहां से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ओके अभी नहीं होगा ना, क्योंकि अभी क्लाइंट नहीं डाला यहाँ हाँ पे। कैंसिल करो, नाउ जस्ट गो बैक टू क्लाइंट, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। ओके ठीक है, यस, राइट, यू कैन सी नाउ द ऑप्शन इज चेंज, राइट। ओके नाउ क्लिक ऑन न्यू, ओके। right, select the database and the right side tab, right side tab. Okay, So in that database, there are 5 databases. So if we want to backup only one database, is there any option to choose? click on that instance, wait a second, SQL वाले में let's see, ये बहुत ही हेवी हो रहा है इसको ये भी। वो एक्चुअली SQL 2021 है ना, ये यहाँ पे देखो, आ रहा है सर। हाँ आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब जिसका लेना है यू सेलेक्ट दैट वन ओनली। ठीक है, ये नाउ गो ऑन अ बैकअप सिलेक्शन। ठीक है, होल डेटाबेस और फाइल्स और फाइल ग्रुप। ये क्या होता है? यार फाइल ग्रुप्स का तो आई डू नॉट हैव आइडिया, क्योंकि ये कभी किया नहीं है। फाइल्स में ये है कि वो आई बिलीव दैट सम द डेटा फाइल्स। ठीक है, बट जनरली वी आर टेकिंग दैट एंटायर दिस एंटायर डेटाबेस, राइट। ये क्या है फिर अभी? यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं, राइट, दैट Yeah. वी आर सीइंग इन दैट द ओरेकल बैकअप। ओके। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का बैकअप इज मतलब क्या होता 3, है? राइट, नंबर ऑफ द बैकअप चैनल्स, ये दिस इज स्ट्रिप्स फॉर का द मतलब क्या लेफ्ट होता है? साइड। हाँ, ये क्या होता है? स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? strips is the channels, channel that in the oracle na streams, like ओके right, that स्ट्रीम्स। is ओके streams, ओके गॉट इट streams, गॉट इट। ओके right, and that per the buffer, or in the last one there would be a size, the block size, ये तो right, चेंजेबल। right, the how much लाइन the लो। block size you want to. ओके So actually this is the that the file you are taking the backup, this is the size of that, right. In the right side these are the transaction logs options, right. The number of backup history, the use SQL compression, right. The main thing is the first one and this one, the truncate log after backup, the second last option for your, this is the main. After taking the backup, the transaction log is delete from the server, ओके। right. Now just click on OK and try to take the backup. नहीं ये सर बढ़िया लग रहा है। कॉमर्स तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कॉमर्स में इतने ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल इसकी मार्केट कम हो रही है ना, कॉम वर्ल्ड की मार्केट बढ़ बढ़ रही है। हाँ कॉमर्स मार्केट बढ़ रही है, सिस्टम में हो रही है। एक्चुअली ये सबसे सबसे ओल्डर टूल यही है। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है, फॉर द डेटाबेस बैकअप, राइट, जस्ट क्लिक ऑन द पॉलिसी अगेन। इट मस्ट बी शेड्यूल्ड बैकअप। नहीं नहीं, खोलो पॉलिसी, खोलो पहले, फिर से खोलो पॉलिसी। स्केड्यूल, अच्छा क्लिक ही नहीं हुआ है, वो तो सेव नहीं किया था क्या। क्लिक ऑन ओके।
full backup. Just remember the always first backup, just initiate the full backup, right? If this is your first backup, then always initiate the full backup first. Just go in details, detail status. Just maximize it and just try to like see these things, right? What is doing here, so you will get the idea. Right, this is also, you can see, this is also creating a batch file. This one in the last line you can see the temporary batch file, and in batch file it is defining all these things. Now just read this line by line. Using backup image, this backup database stock to the virtual device, this, and number of stripe one, you selected a one stripe, right? Created a VDI object for this, SQL connected, setting backup catalog name to this, stock log. Right, so database backup most of the time will fail with the error code 2 or 6. Right, the generic, these are the generic errors. Done, backup done. Right, तो these are the, टू का क्या ये था सर, ट्रबल शूटिंग क्या करना पड़ता है टू के लिए? देखो नहीं, मैंने वही बताया ना, these are the generic errors 2 and 6. अच्छा, The database backup will fail either with the, actually that the SQL backup, SQL backup most of the time is fail with the error code 2, or Oracle backup is fail with the error code 6, right? No, not here, not here. okay. The SQL restore recovery is different, right? Just go on the client. Okay, we are talking about that of the failure, right? So the data, the SQL backup, once the SQL backup is failed, most of the time that error code it will give the 2, and the Oracle database it will give the error code 6. So while troubleshooting the database failures, you have to go on the that client server and check the NetBackup logs. Some of the logs, I'll tell you those logs file, right? You just need to remember those logs file. You need to check those logs, then you will get the idea where is the problem. सर इसका Now you लॉग are कैसे चेक करना है था? इसका इसका ये अगर तो लॉग सेंड करना रहेगा तो कैसे सेंड कर सकते हैं? अगर सपोर्ट रेज करना है हमें, और अगर इसका लॉग सेंड करना रहेगा हमें, तो कैसे कर सकते हैं इसका लॉग सेंड? अच्छा, टू द नेट बैकअप, हम्म। वो जो वेरिटास को, हाँ हाँ। वेरिटास को यार देखो, एक्चुअली वो लोग बताते हैं कि कौन सा लॉग उन्हें चाहिए है, अच्छा। right? The most of the time they will give you like if they are asking the support logs, right, then there is a command for generate the support log, that is nbsu, ओके। right? If they are asking any particular the legacy log or any the client the failure log, then they will give you the idea like where from there they want the logs. अच्छा। Sometimes they just need the activity monitor logs. So activity monitor, just click on the jobs, go in the detail and share the like share the details.
right? Okay. Now just go on that client, go back to the client. We'll see the restore option also. Then, no, not here. Go on the Then client. राइट, यहाँ पे ना एक चीज और देख लेते हैं, देखो रुको 1 सेकेंड, है ना, ऑल इंस्टेंस ग्रुप, राइट. सो if you have the multiple instance, hmm. if you have the multiple databases, you can add in this group and you Okay. can take the backup in one go. You just need to select this group in the policy tab and automatically will start the backup, Okay. right? So this is kind of the group, like just put all the database in this group, right, and it will take that. Now just go back on that client, on this client. I'll show you that restore option also. Insert the policy. No. On that the SQL client, SQL server. Okay. Yeah. Right. Now just click on the start. Can I close that SSMS? Yes. See, I just close it. It will take too much memory. Now Now just go down, Veritas NetBackup. Yeah, there will be a SQL. NetBackup MS SQL client. okay. Please select login parameter. Click OK. Click OK. SQL server connection property. It is not opening. It will open, then it will show और that. सर ये क्लाइंट से हम सर्वर मास्टर सर्वर से रिस्टोर नहीं कर सकते क्या? किस पे? मास्टर सर्वर से यहाँ पे रिस्टोर नहीं कर सकते हम? नहीं रिस्टोर नहीं, करने के लिए क्लाइंट पे आना मैंने पड़ेगा. बताया, देखो मैंने क्या बताया आपको, डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस है, फॉर रिकवरी ऑफ दैट डेटाबेस यू कैन नॉट इनिशिएट द रिकवरी फ्रॉम मास्टर नहीं सर्वर. ऐसा नहीं है सर, कॉमोड में कर सकते हैं हम. कॉम वोल्ट में होगा बट नेट बैकअप में नहीं है. मास्टर सर्वर से कर सकते हैं. नहीं खुला वो. जस्ट नहीं गो खुल इन द रहा. वेरिटास गो बैक. हाँ दोबारा से खोलो एक बार. इसलिए वो टेम्पलेट बेस वाला भी यहीं से हो जाएगा और रिकवरी वाला भी ऑप्शन यहीं से हो जाता है. जस्ट ओपन दैट वेरिटास, गो बैक. अब रेट सुनो. यार इन्वर्टर भी बस लास्ट मिनट पे ही है. नहीं क्या कर रहे हो, वहीं पे जाओ ना क्लाइंट पे. नहीं वहाँ पे आ ही नहीं रहा ऑप्शन, इसके लिए यहाँ पे आया था. नहीं आएगा, वो आएगा. फिर से जाओ. एक्चुअली क्या है ना, वो नेट बैकअप का जो है वो जो बाइंड, मतलब यहाँ पे सीक्वल के लिए एक अलग से ये है, ठीक है. नेट बैकअप एमएस सीक्वल क्लाइंट, ये खुल नहीं रहा क्या? या तो नहीं खुल ये रहा है. नहीं खुल रहा है. खोलना एक बार दोबारा से. नहीं ऐसा तो नहीं है. नेट बैकअप डेटाबेस एक्सटेंशन, प्लीज सेलेक्ट द लॉगिन पैरामीटर फ्रॉम द सीक्वल सर्वर कनेक्शन प्रॉपर्टीज विंडो. करना ओके करना. फिर से जाओ वहाँ पे, एक बार फिर से जाओ उसमें, वेरिटास नेट बैकअप, इसमें जाओ एक बार. नहीं बैकअप आर्काइव रिस्टोर. हाँ
नहीं, इसमें तो फाइल सिस्टम का आ रहा है। SQL वाला नहीं आ रहा है। इसमें जाना फाइल्स पे, ऊपर फाइल्स पे, नहीं नहीं वहां पे नहीं जाओ, ऊपर ये वो खुलना चाहिए यार, वो खुल नहीं रहा है। नेट बैकअप क्लाइंट प्रॉपर्टीज पे जाओ, नेट बैकअप क्लाइंट प्रॉपर्टीज, बैकअप्स वाले पे जाना, बैकअप्स वाले पे, बैकअप पॉलिसी नहीं, नहीं इसको कैंसिल करना। वो या तो फिर तुम्हारा प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो खुलना चाहिए यार ऑप्शन, वो खुल क्यों नहीं रहा है वो। एक बार फिर से जाना फाइल्स पे, फाइल वाले पे जाना, भाई नहीं नहीं फाइल इसी में, हाँ फाइल पे, स्पेसिफाई नेट बैकअप मशीन एंड पॉलिसी टाइप, ये करना, लास्ट लास्ट वाला, ये इससे नीचे, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, इससे नीचे वाला, इससे नीचे, इससे नीचे, हाँ यहाँ पे चेंज करना पॉलिसी टाइप नीचे। ओके। हाँ, यहाँ पे देखो, ऊपर करो, MS विंडोज, हाँ MS SQL, ठीक है करना, ओके। साथ ही तो अच्छा वो SQL वाला बैकअप दिखा देगा, ये आ गया ना SQL वाला बैकअप। राइट, दिस इज योर, बट वो नहीं आ रहा है, वो भी खुलना चाहिए, वो ऑप्शन है ना कि बैकअप के लिए है वहां पे। नहीं मगर यहाँ पे कैसा समझ में आएगा ये? ये यहाँ से ना स्टॉक। रिस्टोर नहीं होगा, बट ये यहाँ से हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट। नहीं यहाँ से नहीं होगा। रिस्टोर नहीं होगा, ये सिर्फ शो करेगा यहाँ पे, रिस्टोर के लिए वो वहीं से चलेगा, वो उस वाले ऑप्शन से, लेट्स सी। यहाँ से ये चलेगा और फेल हो जाएगा ये। स्टोर एवरीथिंग इज ओरिजिनल लोकेशन। ओके। स्टार्ट करो, वहाँ जाओ, एक्टिविटी मॉनिटर पे जाओ, एक्टिविटी मॉनिटर पे, कंसोल पे। ये कहाँ पे किया है, सेम लोकेशन पे है नहीं, डेस्कटॉप उसमें। पे किया हो। अच्छा अच्छा चेंज कर दिया लोकेशन, खोलना जॉब, खोलना रिस्टोर वाली जॉब आ गई वो, बस जॉब। चलेगा नहीं ये, मेरे को नहीं लगता ये चलेगा ये। मुझे भी लगता है, और मैंने भी जो लोकेशन भी दिया है ना वो भी गलत ही है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे कैसे रिस्टोर हो पाएगा? उसी के लिए डेटाबेस का ही पाथ लगेगा ना। चलो इसका रिकवरी काम करते हैं, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अब ठीक है, इन्वर्टर भी चलेगा चलेगा। भाई इन्वर्टर बंद हो गया है। ठीक है सर, चलेगा। यहाँ से नहीं होगी रिकवरी, वो उस वाले ऑप्शन से होगी, उसको एक बार ट्राई करके देखना, वो जो मैंने बता रहा ठीक है, था मैं वो अभी वाला ऑप्शन। देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ठीक है, ट्राई करता बाकी हूँ। और वो अगर सेटअप तुम्हारे पास हो जाएगा तो फिर देखते हैं VM वाला भी। अब ठीक है, VMware वाला मैं कर दूंगा, अगर कल तो हम इसका देखेंगे MS माई स्कूल का। और हाँ उसके बाद जब भी हम वीकेंड को कभी भी कनेक्ट करेंगे ना,
मे बी इस वीकेंड तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो अवेलेबल नहीं रहूँगा। ठीक है, ठीक है। मैं करता हूँ सेटअप रेडी।